Hello my fellow programmers, welcome back to my channel. In this video I am going to talk about the structure of HTML. This is the third video of our Cross Your HTML interview playlist. Let's move ahead. Let's see the structure and syntax of HTML. First we will see the structure of HTML and understand what's the meaning of that tag. And after that, today we will start with practical. So first point is document type declaration. If you want to start with HTML document, H1 to HTML code HTML, then first you have to declare doc type. This is an optional tag that specifies the version of HTML and being used in the document. जो हम कोड लिख रहे हैं उसमें कौन सा HTML वर्जन यूज हो रहा है वो बताता है. The next one is HTML tag itself. Everything now after doc type, everything under every tag is inside the HTML tag. This tag is used to include all the contents of the HTML documents and it is the first tag in every HTML document. ये HTML में सबसे पहला टैग होता है और जितने भी टैग होंगे वो इसके अंदर होंगे. The next one is head tag. This tag contains metadata about the document. हेड टैग में जितने भी मेटा डेटा होते हैं लाइक टाइटल मेटा टैग इज फॉर एसईओ पर्पस एवरीथिंग लिंक्स टैग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक when we will study css then we will see that we'll see how we can link css file with html and javascript. So all this type of linking tag, title tag, everything inside under the html tag and head tag and head tag inside html tag. तो जब हम css पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे css को लिंक किया जाता है html से. The next one is body tag. So this tag contains the visual content of the document such as text, images, videos and other media. दिस मीन्स बॉडी टैग जो है वो जितने भी विजुअल कंटेंट होते हैं हमारे वेबसाइट पे, जैसे कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो जितने भी विजुअल कंटेंट होते हैं लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, एनीथिंग, इमेजेस, वीडियोस, अदर मीडिया, एनी that we will write in the body tag. Okay guys, so now let's start with the code. First make a folder wherever do you want to make. I'm making on the desktop and I gave the name of HTML. After that click here and just open in terminal. When you have downloaded the VS Code, then you can type here code dot. It will take you to the VS Code. It automatically opens the VS Code. Here I will make a HTML file. So I have told you about first I will go and increase my go to setting. If you want to increase the font size, I'll give 20. Now here what will I do? First I have told you what we will give doc type. So code, if you want to create a basic syntax of the HTML, just gives exclamation marks, then it will suggest you and press enter. It have already give you the it will already give you the syntax. जब आप exclamation marks लगाकर enter करेंगे तो ये आपको HTML का बेसिक सिंटेक्स दे देगा. उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डॉक टाइप था ये क्या था, वहाँ पे ऑप्शनल था, इसे हम लोग नहीं भी दे सकते हैं. तो फर्स्ट पहले इतना देखते हैं करके कि और ये हमारा हेड टैग हो गया, डॉक टाइप हो गया जो ऑप्शनल था, ये HTML टैग हो गया. HTML टैग के अंदर सारे टैग रहेंगे. इसे हम लोग ओपनिंग टैग बोलते हैं और इसे क्लोजिंग टैग. दिस वन इज द ओपनिंग टैग ऑफ HTML, दिस वन इज क्लोजिंग टैग. Most of us tags have opening and closing both, but some of only close self closing tag. This one is I will discuss later. So here you can see I've already told you about where we can give meta and title in the head tag, and if you want to show any h1 tag or something you can give here. I'm just typing welcome to press your HTML interview series. I've written there, and here HTML mastery. I gave the title HTML mastery. Now when you run you got some confidence that you have already make a static website like. Okay, just if you have already downloaded that I have told you the extension,
If you have watched my first video, then you can click here, go live button. When you click on the go live button, it will take you to the, it will generate your port number automatically, and will give you, will show you the page. See here, I have mentioned the h1 tag. Welcome to Cursor. It is showing, and I gave the title name HTML mastery. मैंने जो h1 टैग दिया था वो यहाँ से हो रहा है, जो टाइटल दिया था ये से हो रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ एच ए नेसेसरी है, जो डॉक टाइप है, ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कौन सा वर्जन है HTML का। तो इसे हम लोग कमेंट करते हैं, और अब हम लोग करते हैं इसे रन। तो इसे रन करने पे भी वही आ रहा है, लेट्स चेंज समथिंग, नो एरर वी आर गेटिंग, ओके।